Hello, dear students, good morning. Students, in the last lecture we started learning the complete details of the topic the clauses, and I provided you some important information regarding the clauses, the principal clause, the coordinate clause and the subordinate clause. And we also came to know some different kinds of parts of the subordinate clause. So now today in this lecture we would like to learn some more basic rules, fundamental rules concerning to the first part of the adverbial clauses known as the noun clause. Only the first two rules were learnt by us yesterday, and now the third rule is to be learnt by us. Okay, so noun clause. What is the topic today? The noun clause. Okay, the noun clause. N-O-U-N noun clause. C-L-A-U-S-E. The noun clause. Rule number third. R-U-L-E. Rule number third. Rule number third. Noun clause works the noun clause works as a subject to a verb. As a subject to a verb. The noun clause works as a subject to a verb. Okay. Example is here. Why he resigned. Why he resigned is a big mystery. Is a big mystery. Okay. Why he resigned is a mystery. The second example is where he is going is unknown to anyone. So dear students, as you can see here, the word is works here as a verb. It is the primary auxiliary verb which we had learnt in the topic the modals. Okay, so when you find the presence of the word is, am or was, were independently in any statement, so the same word is considered as the main verb here. So here the part is known as the noun clause, and it works as the subject to a verb. When something is written after the verb, so it works as an object to the verb, and when something is written, when a statement is written before the helping verb or verb, so it is known as a subject to a verb. So this is the third rule. Okay, and similarly, as you can see here in this part, the part is known as the noun clause. Okay, noun clause, and the remaining part is the part of the remaining part in this statement is known as the principal clause. So this is the noun clause, NC. Okay, so the next rule is here, rule number 4. Okay, I would like to write a rule number 4. RULE, rule number 4. Object to a preposition, it had been learnt. Object to a verb, it had also been learnt. Complement to a verb, it works as a complement to a verb. Okay, to a verb. Now I put an example, dear students. My belief is that he is innocent. Okay, the second example could be given. Life is what
what we can make it. Life is what we make it, or we can make it. We make it. Okay. The next and the last rule is here. Rule number 5. In apposition to a noun. In apposition, APPOSITI, opposition to a noun, NOUN. So noun clause also works as an apposition, in opposition to a noun. The example is here. Example is very clear. The news that he gave us, okay, that he gave us, the news that he gave us was very interesting. Was very interesting. So now here this the part is known as the opposition part. The news that he gave us, up to here us. So this part is known as the opposition part. I put here comma and here I will put here comma. Beta, when we use, suppose you say that the book that you read daily is, okay, very popular. So I would like to tell you here what is called an opposition part. When we put here the comma, when we separate the first noun in the statement, okay, with the punctuation or comma, and write the other part related to the same noun, referring to the same noun, and the remaining part of the same noun is written after this noun clause, so it is known as an apposition part to a noun. Means इसके साथ जुड़ा हुआ हिस्सा होता है बेटा. The news that he gave us, so this the part that he gave us is known as a noun clause. Okay. That you read daily also works as a noun clause. So here it is very clear that when we use the noun clause, we should follow these 5 rules. First, object to a verb. Second, object to a preposition, as I had already written yesterday. Third, subject to a verb. Fourth, complement to a verb. And fifth, in opposition to a noun. So there are 5 rules, and these are 5 rules should be written by you in your fair notebook also. But now I would like to give you some sentences. Okay, examples of sentences and the pattern of using noun clause. PATTERN, pattern of combining, BINING, combining two statements, two sentences using noun clause, with noun clause, using noun clause, CLAUSE, pattern of combining two sentences using noun clause. How to combine any two statements using the noun clause? It is very easy. So first of all, we will have to check it out. What kinds of statements are given to us? Okay. So pattern first, PATTER, and pattern number 1. What is this pattern number first? It is very easy. When we find any two statements written, okay, one after another,
in front of each other, side by side. Okay, so this is the first statement, this is the second statement. Now I write here the first statement. What is the first statement? Suppose I write the first statement, everybody knows, Isa or Yvonne is a good boy. Everybody knows about it. इस फैक्ट के बारे में, अबाउट दिस फैक्ट, अबाउट इट. सो नाउ द टू स्टेटमेंट्स आर हियर. बेटा देखो दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको नाउन क्लोज से जोड़ने हैं दोनों स्टेटमेंट. कैसे जोड़ोगे? फर्स्ट स्टेटमेंट है इवान इज ए गुड बॉय, सेकंड स्टेटमेंट है एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. सो नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज टू बी placed here. Okay, and the first statement is to be placed there. Both the statements are to be replaced each other, and we will connect here both the statement with the help of the conjunction that, and this the part will be excluded. We need not to use this the part in the answer. So everybody knows, we will write here answer EVERY, everybody knows, KNOWS, knows that Yvonne is a good boy, GOOD, good boy. Again I tell you here we are learning the topic the noun clause. Noun clause is also known as the that clause. It could also be called that clause, THAT, that clause, CLAUSE. It is also known as the that clause. Okay, so here the noun clause which is known as the that clause. So the noun clause works as a subject to a verb. So as you can see here, I have put here this is the part as a noun clause in the beginning of the sentence, and which works as a subject to the verb. ये इस जो वर्ब है ना, इसको हमने मेन वर्ब माना. इस वर्ब के पहले जो लिखा हुआ पार्ट है ये सब्जेक्ट ग्रुप में काम कर रहा है. फिर उसके बाद में हम वर्ब के बाद में लिख रहे हैं जो पार्ट, देखो ये वर्ब है. इसके बाद जो पार्ट लिखा गया है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब. कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब. ओके, इसको कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब कहा जाएगा. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हियर opposition to a noun. So opposition, the fifth rule is in opposition to a noun. Opposition means relation to a noun. This the part also relates to this noun and it gives its meaning itself. So now pattern, the first pattern. When you find any two statements written in this way, so you will have to put the second statement. But you can ask me, sir, how it can be possible that we will put the first statement at the second one, at the place of the second, and the second statement will be placed here at the first one. So कैसे इनको दोनों को इंटरचेंज करेंगे? So it is very simple. क्योंकि जब हम अगली स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, अगली स्टेटमेंट की जो सेंटेंस की जो सेंस आ रही है उसमें देखो एवरीबॉडी नोज, हमें इस स्टेटमेंट को पहले लाना है. यदि हम ऐसे लिखते हैं कि इवान इज ए गुड बॉय लेट एवरीबॉडी नोज, तो गलत स्टेटमेंट निकलता, इसका अर्थ नहीं निकलता. तो एज पर द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज टू बी प्लेस्ड फर्स्ट. और वेन एवर वी फाइंड such kinds of words used in any statement, so you will have to drop them out. ध्यान रखना, किसी भी स्टेटमेंट में अबाउट इट मैं भी लिख दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में, और आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट को हमने दूसरी स्टेटमेंट की जगह रख दिया, दूसरी स्टेटमेंट को हमने पहली स्टेटमेंट की जगह रख दिया, और बीच में हमने क्या लगा दिया, दैट. जब भी हम दैट का प्रयोग करते हैं तो केवल तभी करेंगे जब दोनों स्टेटमेंट सिंपल होती है. दोनों स्टेटमेंट कैसी होंगी? सिंपल स्टेटमेंट होंगी. ये बात ध्यान रखना कि जनरली फर्स्ट स्टेटमेंट को हम सेकंड स्टेटमेंट की जगह रखते हैं. जब दोनों सिंपल स्टेटमेंट आते हैं तो उस सेकंड स्टेटमेंट को हम फर्स्ट स्टेटमेंट की जगह पर लाते हैं. जब नाउन क्लोज से दोनों को कंबाइन करवाया जाता है तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं तो दोनों स्टेटमेंट एक जगह रहती हैं और बीच में दैट लगता है. ठीक है, अभी ऐसा आ भी जाए तो आप ऐसा कर भी सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट लर्निंग द सेकंड पैटर्न. बेटे पैटर्न नंबर 2, PATTER, पैटर्न नंबर 2. बेटे दिस पैटर्न टेल्स अस हाउ we connect any two statements asking a question.
Okay, so here are two types of sentences. Through this pattern we use or we ask a question in the form of noun clause. नाउन क्लोज के रूप में हम एक प्रश्न पूछते हैं. वो प्रश्न कैसे पूछा जाता है देखिए, दो एग्जाम्पल बताता हूं आपको. वेयर आर यू गोइंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन. वी वांट टू नो अबाउट दिस फैक्ट. बेटा इसमें अभी अबाउट दिस फैक्ट जो लिखा हुआ ना, ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब व्हेन वी कंबाइन दिस टू स्टेटमेंट, जब हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो इस तरह के लिखे हुए जो शब्द होते हैं ना, अबाउट दिस फैक्ट, अबाउट दिस, इट, इनको हटा देते हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है. तो हम कैसे जोड़ेंगे? सेकंड सेंटेंस में वी वांट टू नो, यहाँ से अपना आंसर लिखेंगे हम. वी वांट टू नो, वी वांट टू नो, हम ये जानना चाहते हैं. Where, now this the statement is in interrogative form as you can see here, and now it is to be written in simple statement. We want to know where you are going. मतलब जब भी नाउन क्लोज का प्रयोग करते हैं तो नाउन क्लोज का जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट में लिखा जाएगा. ये पैटर्न सेकंड है. अब पैटर्न सेकंड में आप जितने भी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो. जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूँ, आप खुद बना के दिखाओ. हाउ did you, how did they catch the thief? Okay, let me know it. अब इसमें आपको मैंने अभी बताया था let me know it, इसमें it को हमें हटाना है आंसर लिखते समय. आपका आंसर क्या होगा जरा बताओ? let me know, मुझे इस बात की जानकारी चाहिए, मैं बात जानना चाहता हूँ. मतलब हाउ तो हाउ है, ये तो नाउन क्लोज का एक सेंटेंस है, इसको हमें इंटरोगेटिव सिंपल बनाना है बस, और उसी टेंस में बनाना जिस टेंस में प्रयोग हो रहा है, जिस टेंस में लिखा हुआ है. हाउ दे कॉट, CAUT, कॉट द थीफ, THIEF. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न, पैटर्न नंबर 3. ओके, in this pattern we use the statements in exclamatory form also, and we also complete the remaining part of the statements. In this pattern we advise or suggest a person using noun clause. Noun clause. So example is here, very simple example. You should listen to me, I say something to you. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कुछ हटाना पड़ता है, कुछ अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है, इसमें कोई वर्ड नहीं दिया होता आपको. यू कांट फाइंड एनी वर्ड हियर. ओके, ऑलरेडी रिटन इन द स्टेटमेंट. यू शुड लिसन टू मी, आई से समथिंग टू यू. तुम्हारी मेरी बात को सुनना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ. इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? आंसर लिखिए इसको, ध्यान से पढ़ा करो बेटे, शाबाश, वेरी गुड. तो अब इसको कैसे लिखोगे? यू शुड लिसन टू व्हाट आई से, फुल स्टॉप.
व्हाट आई से फुल स्टॉप। जो कुछ तुम्हें मैं कहता हूँ उसको तुम्हें सुनना चाहिए। यहाँ पर हम किसी को एडवाइज कर रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड दिस द लास्ट पैटर्न ऑफ कंबाइनिंग द सेंटेंसेस यूजिंग द नाउन क्लॉज। लर्न दिस ऑल फैक्ट्स एंड note them down in your fair notebook. Thank you.